So Lucknow mayor is distributing the Yogi Ki Pati letter all across the area of Hazratganj. As you see in the visuals, the Department of Lucknow Municipal Corporation here on ground zero alerting in a way, the people out here about the risk, the danger of the illegal Rohingyas and Bangladeshis as well. They have visited many shops out here, all named shops of Hazratganj Chauraha out here. As you see in the visuals, that the people along with the mayor are also distributing these particular letters to those shopkeepers who have gathered out here. And these visuals clearly tells you the story that they have got these particular letters. If you see this particular letter, one of the local have got this particular letter. क्या आप लोग समझते हैं इस पूरे पत्र से जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस वक्त यहाँ पर हैं, उसको लेकर सरकार एक मुहिम चला रही है? देखिए, जो अवैध घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, इनको निश्चित रूप से देश से बाहर निकालना चाहिए। जिस तरीके से एक गैर कानूनी तहत वो देश के संसाधनों पर वो अपना हक समझ रहे हैं, भाई यहाँ के स्थानीय लोगों को भी वो कार्य मिल सकता है। आप यदि असम के हो तो आप असम के आइडेंटिटी प्रूफ करो, अन्यथा आपको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं। यहाँ पर तो आके कहते हैं असम के हैं, हम तो इंडियन हैं। नहीं तो प्रूफ करें असम के हैं। You can clearly see the action and the voice of citizens, of locals of Lucknow, where they also support this particular initiative by the government, where they say that yes, no illegal resident must be allowed in the nation, as obviously there's the scarcity of jobs, and when you'll be giving these particular jobs to those, then it will be a thing to worry, both in terms of national security perspective and in terms of employment. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastava for India Today.